Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 4. The name of the paper is Morphology and Syntax. The chapter is Morphology, and the topic in morphology, the subtopic is allomorphs. This lecture is specifically for the students of BS English third semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. Allomorphs has already been done in from George Yoel's book, and there it was defined with reference to phonemes, phones, and allophones, and the analogy of morpheme, morph, and allomorphs was made with phonemes, phones, and allophones. In this book, Biogrady, we have a little different definition, though the ultimate meaning comes out to be the same. But this looks to be an easy definition and it can be memorized very easily. That allomorphs are actually the variant pronunciations of a morpheme, and these variant pronunciation of one morpheme are called its allomorphs. This example will make it clear. For example, we have the morpheme indefiniteness, and this indefiniteness can be pronounced a or an. So you can see that these are the variant pronunciations of the single morpheme indefiniteness, and as a result, a and an, these are the two allomorphs of indefiniteness. So this is the first example which we can give as allomorph, variant pronunciation of a morpheme. Here the morpheme is indefiniteness, while its um, allomorphs, which can be compared with the phones of the phonemes. These are the morphs of the morpheme, and they are realized as a or an. And we say that these are the variant pronunciations of indefiniteness. So this is the first example in this case. The second example is that of plural morpheme s. This s has different pronunciation. For example, in cats, it is s pronunciation, while in dogs, it is z pronunciation, while in judges, it is us pronunciation. So we have three variant pronunciations of plural morpheme s. So they can be called, this is a morpheme, and these three can be called as morphs, but they belong to the same morpheme. So therefore, they are allomorphs. The first one is pronounced as s, the second one as z, and the third one as us. The third example of the variant pronunciation of the same morpheme is the prefix in, um, with the meaning not. This is used in indirect, for example, which means not direct, inactive, which is not active. But sometimes this is also pronounced as for example, in impossible uh, or immodest. We have something which is not possible. So instead of in, we are using im because of this bilabial pa following it. So if there is a bilabial, you can see pa is a bilabial, and in this case, ma is a bilabial. So if there is a bilabial and you need a negative in with it, that in is changed to im. So this is the variation from the in pronunciation. The next variation in pronunciation is a pronunciation. This is another variation, and we find it in illegal. So we have legal
and we have illegal meaning not legal, and this ill is the variant pronunciation of in. There is also a r pronunciation, as you have in irregular, which means something which is not regular. So therefore, it has different, it has variant pronunciation. This in, it can be im, it can be ill, or it can be ir. So these are the three different variations in pronunciations. We did three examples of allomorphs. ये हमने allomorphs की definition की कि ये variant है, वेरिएट मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है एक मार्फीम का। यहाँ एक मार्फीम इंडेफिनेटनेस है और इसके दो प्रोनाउंसिएशन आ और एन है। तो ये लिहाजा ये दोनों allomorphs हैं क्योंकि ये एक ही मॉर्फीम के दो रियलाइजेशंस हैं, दो वेरिएंट प्रोनाउंसिएशंस हैं। दूसरी एग्जांपल में प्लूरल एस मॉर्फीम है, इसकी एक रियलाइजेशन है, एक ज है और एक अज है, जैसे कैट्स में, डॉग्स में और जजेस में। इसी तरीके से तीसरा जो मॉर्फीम है वो प्रीफिक्स इन है, ये इन की शक्ल में आता है। इसका वेरिएंट प्रोनाउंसिएशन इम भी है जैसे इम्पॉसिबल में, इल भी है जैसे इलीगल में और इर भी है जैसे इरेगुलर में। तो ये इसकी वजाहत है, हम इसको रीड करेंगे और ताकि आपको समझ आए। दी वेरिएंट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ ए मॉर्फीम, और ये भी देख लें कि ये हमने योल से किया हुआ है और आप दोनों को याद कर सकते हैं। योल वाला भी आसान है, आप कर चुके हैं, लेकिन ये तो सिर्फ ये एक अगर आप याद कर लें, ये एक लाइन, द वेरिएंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए मॉर्फीम आर कॉल्ड इट्स allomorphs, तो ये आसान भी है, आप दोनों लिख सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि ओग्रेडी ने ये लिखा है और योल ने ये लिखा है, इससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। The morpheme used to express indefiniteness in English has two allomorphs. Indefiniteness बताने के लिए, indefinite का मतलब है कि ये किसी चीज को आम बनाता है, आम इसका मतलब है, तो इसके दो allomorphs हैं, वेरिएंट प्रोनाउंसिएशन है। एक एन है बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वावल साउंड, ये सिंगुलर वावल साउंड वाले नाउन से आता है। और आ बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो एक नाउन हो और कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उनके साथ फिर आता है, जैसे एन ऑरेंज अ बिल्डिंग, एन एक्सेंट अ कार, एन ईल अ गर्ल। तो ये आपको पहले से पता है। Note that the choice of an or a is determined on the basis of pronunciation. आ और एन को हम स्पेलिंग की बेस पे नहीं बल्कि प्रोनाउंसिएशन की बेस पे करते हैं, नॉट स्पेलिंग, विच इज व्हाई वी से एन एम ए। अब एम ए जब आप कहते हैं तो अ से शुरू होते हैं जो कि वावल है, तो एन आता है। एन एम ए डिग्री या अ यू एस डॉलर, अगरचे ये यू है लेकिन चूंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वावल साउंड नहीं गिना जाता और बाज केसेस में गिना भी जाता है, तो इस वजह से हम अलग आ सकते हैं। Another example of allomorphic variation is found in the pronunciation of the plural morphemes s in the following words. दूसरा एग्जाम्पल प्लूरल मॉर्फीम में आता है, एस प्लूरल मॉर्फीम है और ये मार्श की शक्ल में रियलाइज होता है, से कैट्स, डॉग्स और जजेस में, वेयर एज द प्लूरल इज इन कैट्स, इट इज इन डॉग्स एंड इट इज अज इन जजेस। तो ये इसके तलफ़ुज़ हैं, तीन वेरिएशंस। Here again, selection of the proper allomorph is dependent on phonological facts. ये phonological facts पे डिपेंड करता है, आवाज़ पे डिपेंड करता है कि हम इसको पढ़ें कि ज पढ़ें कि अज पढ़ें। तो हम उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करें कि कब ये स होता है, कब ज कब अज। हमने सिर्फ ये एग्जाम्पल दे दी है कि ये मुख्तलिफ आवाज़ें हैं इस एस मॉर्फीम की। Yet another case of allomorphic variation is found in pronunciation of the prefix in.
ایک اور جو ویریشن پائی جاتی ہے وہ پریفکس ان میں ہے with the meaning not. اس کا meaning not ہے. The final consonant is pronounced as n, جس کا consonant ہے n pronounce ہوتا ہے in most cases اکثر میں، لیکن سب میں نہیں، جیسے indirect, inactive and so on. But it is pronounced as n in front of another labial consonant. Labial consonant جو ہونٹوں سے ادا ہو، جیسے پ اور ما ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو جب اس کے ساتھ آئی این آئے گا تو یہ آئی ایم ہو جائے گا. امپاسبل اور immodest. ایز ایل ان فرنٹ آف another ایل. اگر پہلے سے ایل ہے تو دوسرا ایل ہم اس طرح آئی کے ساتھ ان جو لگائیں گے وہ ان لیگل نہیں ہوگا، انلیگل بن جائے گا، اور یہاں پہ ر بن جائے گا ان فرنٹ آف another آر، اگر دوسرا آر پہلے سے موجود ہے تو یہ ویریشن ہو گئی ایک ہی مارفیم کی. دیز چینجز آر ایزی ٹو اسپاٹ. یہ چینجز دیکھنے میں آسان ہے بیکاز آف دا اسپیلنگ کی وجہ سے. بٹ ریمبر دیٹ allomorphic variation involves pronunciation. اس میں پروننسیشن انوالو ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ اس طرح نظر آئے جس طرح یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایس جو ہے اس کو ز پڑھیں گے یا س پڑھیں گے. تو یہ چونکہ آپ پہلے کر چکے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک لائن اس میں آپ اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. دی ویرینٹ پروننسیشن آف اے مارفیم آر کالڈ اٹس allomorphs، اور اس کی یہ 3 ایگزامپل، اور تقریباً یہی ایگزامپل ادھر بھی تھی، میرے خیال میں یہ ایگزامپل ادھر نہیں تھا اور یہ ہم نے کیا تھا. تو یہ لیکچر نمبر 4 یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تھینک یو اینڈ گڈ لک.